audible. Hello everybody, hello. Welcome back, welcome back. क्यों आवाज़ें होगा ना तो I think we are audible now, right? Right. Yep, I think we should be audible. Hey, welcome back everybody, whoever is on the stream. Alright. Should be going live. Yeah, thank you. Okay, so hi everybody, welcome back. Welcome back. Yeah. So, from last stream, we concluded that yes, backend is something I wanted to do. I don't know if you were with me or not. There are 5 views, so I guess somebody did witness what I was doing. So also in backend, like what exactly am I supposed to do? Like what exactly should I do? So wait, where did it go? Okay, so as you can see, my thumbnail has Node.js, Express.js, MongoDB, and PostgreSQL, right? And Fast API. Sorry, it's REST, I guess. So yeah, we are not going to do that. We will continue with Python. I mean, start with Python. So let me tell you something before I begin. Again, right? So of course I'm a student of from CS, from physical group, so I know a bit much of programming, but I don't still don't know many things. So I think I'll be learning that on stream. I don't care if I get a strike or claim, because this is, of course, I just want to do it. I just wanted to do it. So money making was never my first priority, like doing streams and doing all that. But if it grows, then sure, why not? But if it doesn't, who the fuck cares, right? So yeah, okay, in in school, right? We have, I mean, I was taught up to arrays and many a few more things, right? In JavaScript and C C programming language, right? So I still don't know array, but I am still confused with loops. So I'll be continuing with that. Because yesterday I did a bit, like tried to study a bit, and I will look. Let me show you what I follow. Thank you, viewers watching. Thank you so much. Mm, where should I go? Wait. It depends. Like I had did a bit research on like how to exactly do it. By the way, yeah, I do everything from AI. Like because if it can, then why should I do it? And it's not even really important to make a thumbnail by myself. Like it makes no sense, obviously. So, okay, thumbnail design.
Hmm. Okay, back to where supposed to be, so programming language and okay, so the chat is kind of long, so it took a bit time. Wait, I forgot what idea. Wait, let me just change. My internet is kind of slow, so sorry for that. The stream might be lagging. It's not you, it's me. Yeah. Copyright risk. Okay, so I think this was the one. Wait, I forgot. CS. Is it? CS, what is introduction to programming? I'm following this website, by the way. So what exactly I'm trying to do is, also, if you are really watching me and you also want to grow, like to learn programming and do stuffs, right, bullshit, like whatever you are interested in, so that's the best way to learn it is like, I'll show you, I'll literally show you. So yesterday I was on this question, I guess. uh, yeah, right, I was on this question. I was a bit confused, like why didn't it work like expected. Initially I did not set this value, right, so it was like not even printing. It did run but it did not print. So I asked it like, what's wrong, what's going on? So it says like, first, your code, this I asked it like, why do I get error if I remove the greet 0 and just run it, right? So it told me exactly what happened, why it happened. So that's the way you learn, okay? Like, don't randomly follow YouTube tutorials, just like, cause for sure you'll get stuck in the tutorial hell forever. Like, trust me, I've tried this. It's been 4 years. I'm still like, I was stuck. Like, I most of the time I just procrastinated, but now I am dedicated into it, and let's do, because now I'm gonna do. And what channel I follow, to be honest, I don't really follow. I don't now, from today onwards, I don't want to follow a single channel, but I want to follow the concepts. How am I doing that? I'm using these, okay? I'm using it's official, from official uh, guide from, or let's say documentation by Harvard. So yeah, I'm following these, and maybe a little more things on the way. So college by Python. I'm following this. इसके लिए डाउनलोड I was in, yeah, I was somewhere and not dictionary. Okay, I skipped these all. Like, it wasn't mentioned in the in the documentation. But I recommend you do follow that, because that might So help. I'm writing an essay I was following this, and loop I'll run. follow this. So, but I'm trying to follow this one because this exactly tells you what exactly to do, right? So today we're gonna learn loops. Like, it's kinda long video, so let's go. Let's get to this. Uh, all right. Okay, back to where I was.
So okay, I could follow this directly, but like it still isn't. Oh, nice. Okay, I didn't really check it. Wow. Where is it? In loops, yeah. File for list range. Okay, we got all this. Why not follow exactly this then, like this? But the thing is, they explain really good, and I've been following this channel and Code with Harry. Like I had followed him, but now I want to see and explore if there are any other who like goes concept wise. Okay, because in programming, concept is what really matters, right? So why not? I won't yap anymore. I'll just do. So if you wanna watch, watch. If you don't, if you have some queries or like something to say, you can say in the chat. Oops. Slides. Slides. Okay, thumbs up. Oh wow. Start mew stop. Okay, while start. I want to go to 3, 2, 4. Okay, I'm still not so much variables. Just trying to tell me something. I don't know what exactly to say, but nice. I think I should stick to the source. I think maybe it's something like that. Okay, this isn't making sense for me, like not correctly. I'm still a bit confused, but let's just follow this channel, right? हम अपना एक इंडेक्स वेरिएबल बना सकते हैं. वी कैन कॉल इट idx, जिसको शुरुआत कर लेंगे 0 के साथ. और कब तक लूप चलाएंगे? तब तक लूप चलाएंगे जब तक हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू, इन चीज़ों को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू माई लेंथ ऑफ लिस्ट -1. क्या हम कह सकते हैं यही कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी कि इंडेक्स की वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या आएगी? 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट -1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 9. या इसको लिखने का एक और बेटर तरीका होगा, लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट. यानी लेंथ ऑफ लिस्ट होगा 10 के इक्वल, तो पहले इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा. तो 9 तो लेस देन 10 होता है, पर 10 के केस में वर्क नहीं करेगा. तो 0 से लेकर 9 तक सारी की सारी वैल्यूज के लिए हमारा लूप रन करेगा. तो ये हमारे लूप की कंडीशन का लॉजिक होता है. लूप के अंदर मेन चीज कंडीशन ही होती है एक तरीके से, कि आप क्या फाइनल कंडीशन सेट करोगे जब आपका लूप रुक जाए. तो लूप इंडेक्स से शुरू होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 पे, और कहां पे रुकेगा? इंडेक्स इज इक्वल टू 9 तक जा रहा होगा मेरा लूप. और हर बार मुझे क्या करना है? हर बार मुझे प्रिंट करवाना है लिस्ट ऑफ इंडेक्स को. तो पहले लिस्ट ऑफ इंडेक्स लिस्ट ऑफ 0 होगी, फिर लिस्ट ऑफ इंडेक्स लिस्ट ऑफ 1 होगी, एंड इस तरीके से. तो एक बार इस चीज़ को कोड में देखते हैं. मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल लिया, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट्स विद 0. हमने फिर क्या किया? Okay, so yeah, I think I did this last night. The tuple thing, okay. So wait. So what it says tuple, now print from here to here, right? So that's called, I think that's called slicing. Wait, so index equals 0,
Okay, why is it suggesting me? I don't want suggestions. Suggestion. Let's use it for an hour. Let's see. Yeah, because like that, these things like they might ruin your experience of learning. Okay. So what this said was, okay, let's get back to the concept once again. So first let's see what's exactly the question. It says search for a number x in this tuple using loop. First of all, what is tuple? Tuple 1AQ. Let's ask this guy. What exactly is tuple? This is one of the most misunderstood topics in Python because beginners usually hear a tuple is like a list but immutable. By the way, immutable means it cannot be changed, if you guys don't know. So this means it can be changed. Okay, it cannot be changed. Now, what will it go for the tuple? So while that's true, it doesn't explain why tuples exist. So let's begin the concept from scratch. First, what is a list? Okay, firstly explaining you what a list is. So list, okay, list one is the you can do things like fruits.pend mango, fruits.remove banana. So instead of banana, mango appears. Oh no, after orange mango appears, banana gets removed, and on fruit zero means it's the first value. Okay, the first string, it gets replaced by grape. So for fruit zero, like always in Python, counting always starts from 0. Okay, so 0 is equal to 1 in Python. So fruits, okay, not exactly what I said, but 0 means it is on the first place value, right? So 0, like this is the first place value. This is on number 1, right? This is on number 1, but like usually we say number 1, number 2, number 3, right? So that exactly like that. But in Python, when you say 0, it automatically suggests like understands number 1 or what's on the first element. एक इंडेक्स वेरिएबल बना सकते हैं, वी कैन कॉल इट idx, जिसको शुरुआत कर लेंगे 0 के साथ. Okay, before that, let's exactly do what. Let's have mutable. Simply means changeable. Exactly, that's what I said. Mutable means changeable. Immutable means not changeable. You cannot just change it. Right? So now, imagine you have data that should never change. Like suppose days we have Sunday, Monday, Tuesday. Day 0, pizza day. This should not be changed, right? Uh, should your program accidentally do this? No, it should not. Okay, let's run this. See, it gives error. Name days, it is not defined. Right code. Okay, no, not right code. Okay. This value should stay fixed. Tuple is simply an order collection whose contents cannot be changed after it's created. So once you create this coordinate, you cannot just change it, right? I mean, in code you can just do this and blah blah blah, but not like that. What is the current date? 1020. Why should we want something locked? Why wouldn't we want something locked? Worth this, right? Okay, I don't think alright, it's enough. Yeah,
और कब तक लूप चलाएंगे, तब तक लूप चलाएंगे जब तक हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू, इन चीज़ों को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करते हैं, दैट इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ 1, फिर होगी नम्स ऑफ 2 एंड सो ऑन। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। तो हमारे पास पहले 1 आया, 4 आया, 9, 16 एंड इस तरीके से। Okay, this was question number 4. I did it already. If you want to see like this, since using while loop, I used different method. I did not ask for length, by the way, and it is basically like square of every next number. So 1, right? Another next number is 2. Another next number is 3. Another next number is 4. Another is 5. So 25, 6, 36, 4, 7, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100. Right? So let's see what exactly happened. Firstly, I initiated the number from 1, right, and I told it like while the condition is when number is less than or equal to, right, is less than equal to 10. So see, number is 1, it's still less than equal to 10, right? So do what? Print number twice. Okay, not 2 times but square it, like multiply it 2 times. Yeah, multiply it 2 times. So it happened, and if I just do this, then it changes the whole meaning, right? Then it will go to multiplication table, but okay, we're gonna do this and number plus 1. So what will this do is this will get increased after every square. So first of all, 1 square is 1, then it changes the number, like this number is changed, so it's another number. Then while another number is 2, so 2 is less than 10. Yes, it works that way. Blah blah blah. Okay, I'm confused in this. I gotta watch the video first. सारे के सारे लिस्ट के मेंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दूसरी लिस्ट होती, फॉर एग्जांपल हमने अपने हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं, पहले हमारे पास आयरन मैन है, देन वी प्रोबेबली हैव थॉर, देन वी हैव सुपरमैन, वी हैव बैटमैन एंड इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे हीरोज़ के अगर मुझे नाम प्रिंट करवाने हैं तो वही सेम लॉजिक लगेगा। एक इंडेक्स वेरिएबल ले लो, इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, एक लूप लगा लो जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन लेंथ ऑफ हीरोज़ नहीं रहती, लिस्ट ही तो है एट दी एंड। एंड हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है हीरोज़ ऑफ इंडेक्स, और हर बार इंडेक्स की वैल्यू को कर देंगे प्लस इक्वल टू 1। इसको सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले आयरन मैन आ गया, थॉर आ गया, सुपरमैन, बैटमैन, इस तरीके से सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे हमारी लिस्ट के वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। हम चाहे तो इंडेक्स को आईडीएक्स की जगह सिंपली वी कैन टेक इट एज आई, तो और छोटा हो जाएगा वेरिएबल, बट ये लूप वैसे का वैसे काम करेगा, लॉजिक वैसे के वैसे हमारा काम करेगा। तो इस तरीके से जब हम लिस्ट के एक एक आइटम के ऊपर जाते हैं या किसी टपल के एक एक आइटम के ऊपर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसे हम कहते हैं चीज़ों पर ट्रवर्स करना। ट्रवर्स यानी ट्रैवल करना, किसी भी लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर एक एक करके जाने का मतलब होता है उसके ऊपर ट्रवर्स करना। तो जब भी मैं ट्रवर्स शब्द बोलूँ तो उसका मतलब होता है ट्रैवल कर रहे हैं और एक एक एलिमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं, और जाके हम हो सकता है कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर सिंपली उस एलिमेंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और अपने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये सवाल कह रहे हैं सर्च फॉर अ नंबर एक्स इन दिस टपल यूजिंग लूप। तो पहले जो लिस्ट थी, तो टपल की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, इस बार पैरेंथेसिस होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, टपल हो जाएगी। इसके अंदर मुझे एक एलिमेंट नंबर को सर्च करना है, वो नंबर एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, और यूजिंग लूप सर्च करना है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, सर्च करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अगर मैं आपको एक लिस्ट दे दूँ बहुत सारे नामों की, मैंने आपको लिस्ट दे दी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ये चीज़ ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई, एफ हो गई, जी हो गई, के, एल, एक्स, जी, बहुत सारे नाम दे दिए। तो किसी भी चीज़ को सर्च करने का, फॉर एग्जाम्पल मुझे एल को सर्च करना है, बेस्ट तरीका होगा पहले आइटम पे जाके देख लो क्या ये एल है, नहीं है, फिर नेक्स्ट आइटम, फिर नेक्स्ट आइटम, फिर नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, और यहाँ पे मुझे मिल गया। तो इस तरीके से एक एक करके हर आइटम के ऊपर हम जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो मेरे एक्स के बराबर है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एल। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे अपने नंबर को सर्च करना है। अब सर्च करने से पहले एक टपल का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स कॉपी दिस एंड इनफैक्ट इन सबको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई भी नंबर्स ले लेते हैं और इसे हम एक टपल की फॉर्म में लिखने वाले हैं, ये हमारी टपल होगी। अब इस टपल के सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, प्रिंट करा देंगे नम्स ऑफ आई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। जैसे लिस्ट में प्रिंट करवाते थे वैसे टपल के अंदर प्रिंट करवा देंगे, ये सारे आइटम हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। लेट्स सपोज मुझे किसी x इज इक्वल टू 36 के लिए सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल 36 के लिए मुझे सर्च करना है जो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर बार एलिमेंट को प्रिंट कराने की जगह हम चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा एलिमेंट x के बराबर है, और जहाँ पर भी एलिमेंट x के बराबर मिल गया हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे फाउंड। जैसे यहाँ पर हर बार ये कंडीशन तो वैसी रहेगी, अपडेट वैसे रहेगा, कंडीशन वैसे ही रहेगी, इनिशियलाइजेशन वैसे ही रहेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी जिस वैल्यू के साथ हमने स्टार्ट किया था। चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा काम क्या हो गया, काम हो गया कि अगर यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर नम्स ऑफ आई यानी मेरा जो नंबर ith इंडेक्स पर है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाती है इस x के, तो उस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, उस पॉइंट पर मुझे प्रिंट करवा देना है फाउंड।
हम चाहे तो इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं एट इंडेक्स और यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, फाउंड एट इंडेक्स आई। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं तो आ गया फाउंड एट इंडेक्स 5। 36 कहाँ पे है? दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इंडेक्स 5 पे ही हमारी 36 की वैल्यू है। तो ये लूप वर्क कैसे किया होगा? लूप के अंदर सबसे पहले हम i इज इक्वल टू 0 पर गए होंगे, हमने चेक किया होगा क्या 136 के इक्वल है, यहाँ पर 136 के इक्वल नहीं है, तो सिंपली हमने क्या किया +1 कर दिया। फिर देखा क्या 436 के इक्वल है, 436 के इक्वल नहीं है, फिर दोबारा हमने +1 कर दिया। फिर देखा 936 के इक्वल है क्या, 9 भी 36 के इक्वल नहीं है, तो हम इफ के अंदर नहीं गए, हमने दोबारा +1 कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमने देखा 36 के इक्वल है, तो फिर हमने उस चीज़ को प्रिंट करवा दिया। पर फिर भी हम लूप के अंदर क्या किया, हमने दोबारा +1 किया और हम हर इंडेक्स पर गए हैं। यानी अगर मैं एल्स को कहूँ तो एल्स के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं फाइंडिंग, और फाइंडिंग मिलने के बाद भी फाइंडिंग प्रिंट होता रहेगा। जैसे पहले तो फाइंड कर रहा है शुरू के 4-5 इंडेक्स तक, फिर फाइनली 36 मिल गया, फिर अगले वाले इंडेक्स पे भी ढूंढ रहा है। अगर 36 2 बार होता तो ये 2 बार फाउंड प्रिंट करवाता। इसे रन करें अगर तो 2 बार फाउंड प्रिंट कराया, एक बार कहाँ पर मिला, एक बार इंडेक्स नंबर 5 पे मिला 36, सेकंड टाइम कहाँ पे मिला, सेकंड टाइम मिला इंडेक्स नंबर 10 के ऊपर। तो इस तरीके से लॉजिकली हमें समझना है कि लूप कैसे कैसे चल रहा है। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मिलता नहीं, जब मिलेगा तब प्रिंट करवा देगा, पर उसके बाद रुकेगा नहीं लूप। लूप तो कहाँ तक चलेगा? लूप तो पूरी की पूरी टपल तक चलेगा, जब तक टपल की लेंथ नहीं आ जाती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे लूप्स वर्क करते हैं, स्पेशली सारे के सारे वाइल लूप पाइथन के अंदर। तो आई होप कि अभी तक हमने इनफ एग्जांपल। Okay, so let's right. So what it did was, firstly, what the fuck, like this. Firstly, it created a tuple, right? It created a list, by the way. So create list, and what it did, it said find this. It gave the it made a variable. Okay, so let's say vari- variable like, so it stored a variable in x, right? So here 36 is a variable, so I'll choose 24, because right. And now I got to initiate the numbers, so I'll initiate from 0 I. Okay, I want to initiate the number might be from 0, number 0. Now we got to give it condition, right? So okay, let's see this. Okay, how do I man, how do I okay, I don't even know how to use this shit, but okay, we can just zoom it. Shift plus now. So what's written here is, first we'll take variables. Variable equals okay, something number, any number 24, right? And then we got to initiate in it, and we got to initiate the number, let's say from initiate number from 0 or 1 for now, like you can choose any one of them. And it says while this is now, here's the condition starts, while length of number firstly okay, so I'll tell you about this. This is the created list. Okay, so length of number, let's not say number, let's say length of created list, right? This is a create list. Okay, so equals 1 2 3 4 5 6 7 okay, alright. So okay, this, suppose this is a single variable, so I'll put this here. So it says this, what it does is it finds the length of this number. Okay, as you can see, what they have done is it says, see, it's okay if I is less than number, length of number, I am mistaken somewhere, I is less than length of created list, I is less than length of created list. Okay, so I is just basically a loop, no, it's a variable that we created to store loop.
to initiate the loop. So here the init or I, it's the same thing. Like okay, this is basically the variable like this I. I just here to explain this created it, and now while we created this, so what happens is if I is less than the created list, right? When while I is less than created list, now we got to see the condition if x equals 0, if x equals 24, then print print what? Print what did it print? Okay, I forgot. Okay, print number found. Print number found. Right, print number found. Else finding, right? And then we'll continue the number, right? Then we'll continue the loop, right? So since now what do we do? Number is greater, okay, number plus equals 1, so it just like does this is like how do I say this is like increasing for the second number, like this is the initiate. So I basically I equals to 0 or 1, so it will initiate for the next number, and again this will check the condition. If it's true, again number, again number, again number, and again number. That's what we can see. Okay, here I can see something. If nums equals x. Okay, so not exactly the value, but value stored in x, right? Like not exactly 36, but it used the variable created. Okay, I have mistaken somewhere. F num I, right? If num I equal x, then yeah, this makes perfect sense now. Let's try to code it. So since we already have this number here, now what we're gonna do is, now we want to, okay, let's see what we did. It says create a list. It says now store make a variable, so we will make a variable. Let's say okay, like as said x and 24, but it doesn't exist. 25, that's just for the clearance, and then we will initiate it. Now we will do initiate I equals 0. What we're gonna do is, now we will make a loop while, okay, now we're gonna do is while number no, while I is what we created, I forgot. Phone number 0, well, okay, length of created list I is less than this is my issue again. Okay, somebody again already messaged. That's alright. Alright, okay, so I is less than length of the variable. You see the variable we made is num, so num, and don't forget to put a colon here. Now this colon, what it does is it says that yes, the loop has begun, I mean the condition has been mentioned. Now from here this will work on the lower functions, or let's say the lower works will work. No, how do we say this?
यस्तो कि लाइक अब यहाँ दिएको कन्डिसनहरू तबसम्म काम गर्छ जबसम्म यिनीहरू ट्रु हुन्छ है. सो लेट्स सी इट्स hey second users, thank you so much. So while I is less than length of number, त्यसमा फेरि हामीले के गरेका थियौँ? That to work. Live again. Yeah. So it was like, okay, we gave it a condition. Condition theory. Say Java if number I is equal to x. Okay, there's something wrong, I think. Okay. Okay, I think it should work. Okay, I still don't know the syntax of this. I mean, I forgot. Okay, it's okay. A colon. That's how it works. So colon print print what? Found the shit, and then comma I, else else print finding the shit. Yeah, okay. Now wait, number plus equals to. Okay, I want to show you guys something. Why did this number get an error? Like, you see the red thing? It says unident amount does not match previous ident pilings. Variable num equals any, num is to any. So I think this should work now. Now I'll tell you what just happened. The space you see here, like, it says that it falls under while, right? But there are a few things that also falls under it. So it should exactly fall under while loop, and I think it should work now. Infinite loop makina royal. This one that's not what the fuck. Okay, what found the shit. Wait, found it or not? Okay, still finding. What's wrong? Wait. Still finding. Yeah, what's the problem? Wait. Okay, now it should work. Okay, so now it shows an error. What exactly happened?
के गरेको थियो I less than length of numbers if number I equals एक्स के थ्रू वाइल लूप को समझ लिया है. नेक्स्ट अब वाइल लूप के अंदर ही हम दो और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ रहे होंगे जो है हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड. जब भी हम लूप्स को action दीदी that means if number I mean that's what I did right okay I see the mistake here यहाँ के भछ भन्दाखेरि मैले के गर्दिएछु भन्दा मैले यो नम्बरहरू सबैलाई बढाइदिएँ के त्यो चाहिँ गर्न नहुने हो गर्नुपर्ने के हो भन्दा आईलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हो 0 जुन छ नि जुन इनिसिएट गरेको छ त्यसलाई यता बढाउनु पर्छ ल अब काम गर्नुपर्छ फाउन्ड दैट शी ओके अब एकछिन यहाँ हेर्नु के भयो I think you can see this यहाँ भन्दा छ नि found that crash हान्छ but found that shit 4 अब पहिलो कुरा म यो त्यो देखाउँछु के भन्ने 1 एकछिन 1 2 3 4 5 यो जुन 5th प्लेसमा आएको छ त क्या 0 बाट गर्नुपर्ने 0 1 2 3 4 4th मा हाम्रो 25 छ ए यतै छ त 25 छ है 4th नम्बरमा हाम्रो 25 छ नि हो यो x को भ्यालु कहाँ x को भ्यालु 25 छ कुन नम्बरमा एक्जिस्ट गरिरहेछ यो 4th नम्बरमा एक्जिस्ट गरिरहेछ त्यसैले अब 4th प्रिन्ट गरेको अब किन गरे चाहिँ किन भयो त है यो गरेको कारण के हो भन्दाखेरि यो अझै परिरहेछ यो के रे एल्स को भित्र है हामीलाई चाहियो यो लूप भित्र चाहियो लूप को कन्डिसन भित्रै छ सो ओके अब चाहिँ सही काम गर्नुपर्ने त्यसका बाजे के भएको व्हाट्स द एरर man व्हाट्स द एरर बन्द गरे print finding shit यसमा नि स्पेस चाहिन्छ र फरक त नपर्नुपर्ने यसमा त यो दिदीको कस्तो छ प्लस इक्वल टु 1 एकछिन एल्स भित्र हुनुपर्ने मैले उता प्रिन्ट गराइदिएको छु मैले प्रिन्ट पछि प्रिन्ट गराइदिएको छु प्रिन्ट पछि इनिसिएट गराइदिएको छु व्हिच इज रङ अब आई थिंक इट शुड वर्क फाइन राइट सो अब हामीले के हेर्यौं भन्दा यहाँ हैन यसले के भन्दो रहेछ दुईचोटी प्रिन्ट गरे के यसले यो दुईचोटी चाहिँ किन प्रिन्ट भयो यहाँ के भयो भन्दाखेरि सुरुको जुन 4 चोटी छ त खोज्न खोजे के यसले लाइक इट वाज लुकिङ फर 25 तर भेटेन 5th प्लेसमा आएर यहाँ भेट्यो जस्तै यहाँ हेर्नु न 1 2 0 1 2 3 4 राइट फाउन्ड दैट शिट अन 4th अब यहाँ मैले अझै केही ट्राई गर्नु मन छ भेटै अब मैले के चाहन्छु भन्दाखेरि अब युजरले इनपुट दियोस् अनि भनोस् के यसले कि दैट नम्बर एक्जिस्ट हियर सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि int input enter the number you are searching for la होइन फक के भएछ भन्दा के भएछ भन्दा यो उतामा स्ट्रिङमा हुनुपर्ने कि
number you are searching for. Enter the number you are searching for. त्यसपछि इनिशिएट गर्दा 0 बाट गयो है. अब हेरौँ त कि foundership on this है. अनि रन गरौँ त. Enter the number you are looking for. I'm looking for, let's say 100. Okay. खोजे भेटेन. Found that shit on 9 है. भेट्यो. यसमा मैले अरू केही चेन्ज गर्न सक्छु. मैले के फरक गरेँ भन्दाखेरि मैले यसलाई एउटा इनपुट फङ्सन दिएँ. यसलाई भने कि लाइक तेरो काम के हो भन्दा त युजरबाट सोध है के छ. त युजरबाट चाहिँ सोध के रहेछ भनेर, लाइक त्यसको चाहना के छ, कुन नम्बर खोजिरहेछ. त्यसपछि नम्बर आईबाट इनिसिएट भयो एज अलवेज. फेरि वाइल अब लुप लाग्यो. अब दिस इज कन्डिसन. जबसम्म आई इज लेस देन लेन्थ अफ नम्बर है. अब एकछिन यहाँ मैले 101 फेरि एकछिन 3 के थियो स्टक भयो. मैले 101 खोजेँ. Finding that shit didn't found one. अब मैले यस्तो अब अलि दिमाग लगाएँ यता के गर्न खोजिरहेको छु. मैले के भने भन्दाखेरि 101 मलाई खोजेर त्यही जुन कि यो लिस्टमा छैन. सो अब मैले त्यो लाइक ल मानौ होइन, मैले वेबसाइटहरूमा जस्तो हुन्छ नि केही खोज्यो भने भेट्यो भने रिजल्ट नट फाउन्ड भन्छ. मैले त्यस्तो खालको चाहियो कि. सो अब के भन्नु पऱ्यो भन्दा है के गर्ने. अब मैले एकछिन दिमाग लाउनु पऱ्यो. अलि माथि जाएर अलि माथि. ठिक छ. के गर्न चाहन्छु म एक्ज्याक्टली के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले पहिला नम्बरहरू यहाँ लिस्ट गरेको. सपोज म एउटा सर्भर छु रे, लाइक डेभलपर भनौँ, हजुर युजर हो. ल हजुर डेभलपर, म युजर. हजुरले ल अब यहाँसम्म सेट गर्नुभएको रहेछ, बट मलाई थाहा छैन है. मैले त्यसको बियोन्ड केही सर्च गरिदिएँ भने होइन, मैले त्यसको बियोन्ड केही सर्च गरिदिएँ भने मैले त्यो मैले आउटपुटमा के देख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि रिजल्ट नट फाउन्ड है, ट्राई लुकिङ फर समथिङ एल्स, यस्तो खालको केही आउनु पऱ्यो क्या. बट अब कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरिरहेको छु. सो मैले के गरेँ, पहिला एउटा लिस्ट बनाएँ. मैले लिस्ट बनाइसकेपछि के भने भन्दाखेरि युजर्सहरूमा एउटा नम्बर लिएँ है त. इनपुट मागेँ, युजरले दियो है. अब आइबाट इनिसिएट भयो है. इफ नम्बर इज इक्वल टु एक्स, अब मैले बिएससीआर कन्डिसन कस्तो भयो मैले, किनकि लास्ट टाइम चाहिँ पढाएको थिएँ, धेरै पहिला पढाएको थिएँ, त्यसको अकर्डिङमा म त भनिरहेको छु म. सो it does not exist. बियोन्ड गयो कि मेरो लाइक क्यापेसिटी भन्दा बियोन्ड गयो कि मेरो स्टोर गरेको भ्यालु भन्दा बियोन्ड गयो. सो
as if number as if number not equal to number I के भयो number not equal to number the sense one okay अब यहाँ म लिन्छु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को हेल्प यसरी एआईलाई युज गर्ने के use it how to learn okay things के एआईबाटै सिक्ने हो कि एआईलाई आफ्नो साथी बनाउने हो है आफ्नो मेन्टर बनाउने हो त्यहाँबाट सिक्ने हो सो व्हाट ह्यापेन्ड भाइ मैले भने यस्तो यस्तो छ now I want to modify it and use मैले यसलाई अब आफ्नो कन्डिसन बुझाउँछु कि म कस्तो सोचिरहेको छु म त्यसलाई त्यसै भाषामा भन्छु अब यसले बुझ्छ कसरी त्यो हेरौँ है तपाईलाई बुझ्नु त बुझ्छ to modify it and use like website search bar like when user searches random queries searches random queries and that is not stored in the database so the output is given as result not found. I want to do something like that. How do I do it? प्रेजै गर्न थाल्छ ओह सफ्टवेयर डेभलपर ल यसले के भन्छ युजर सर्च थ्रु अल आइटम्स फाउन्ड भयो भने यस भेटिँदै भेटेन भने नो रिजल्ट्स फाउन्ड है त लजिक त यसले खत्रै दियो जुन कि मेरो नि सेम दिएको थियो मलाई के भयो भन्दाखेरि त्यो कुरा उतार्न आएन के अब एकछिन कोडलाई हेरौँ त के भन्यो इफ ए लामो त्यो त अघि नै भइसक्यो रहेछ त थेट यो त कुरा उही त भयो नि मैले गर्न खोजेको अनुसार त यो त अलरेडी छ त यो त मैले अर्को भाषा मात्र लेख्दिए यसले के गर्यो भन्दाखेरि फाउन्ड भयो भने ट्रु गरिदेऊ कन्डिसन ब्रेक गर बढाइदेऊ इफ भेटेन एकछिन यसकोले के फरक गर्दो रहेछ म हेर्छु त यसलाई मैले एकछिनलाई कमेन्ट गरेँ यसले के गर्दो रहेछ त्यो हेरौँ है त एन्टर नम्बर 12 मैले मानौँ 12 गरेर रिजल्ट नट फाउन्ड यसले सिधै भन्यो रिजल्ट नट फाउन्ड अब यहाँ हेरौँ यो रिजल्ट नट फाउन्ड कहाँ दिस इज द सेम थिङ के अब कुरा के रह्यो नयाँ कुरा के थाहा भन्दाखेरि पाइथनमा नट भन्ने पनि एउटा किवर्ड रहेछ के लाइक आफै काम गर्ने लाइक जे नामको अर्थ छ त नट भन्ने नाइ नो यस्तो हो लाइक हुँदैन भन्ने खालको त्यो प्री एक्जिस्ट गर्दो चाहिँ रहेछ ल है केही त सिकियो अलिअलि इट्स द सेम थिङ लाइक आई सेड मैले यो भनेर अलि म कन्फ्युज नै भइरहेको थिएँ कि लाइक यस्तै हो कि के हो भनेर बट
what I did is exactly I thought actually लामो के गरी लामो यसलाई कमेन्ट यसरी गऱ्यो अब एरम दिदीले कहाँ पठाउनुहुन्छ हामीलाई स्पेशली सारे के सारे वाइल लूप पाइथन के अंदर। तो आई होप कि अभी तक हमने इनफ एग्जांपल्स के थ्रू वाइल लूप को समझ लिया है। नेक्स्ट अब वाइल लूप के अंदर ही हम दो और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ रहे होंगे जो है हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू अघि यही कोडमा युज हुन सलम जिउको बोतलमा पानी छ उफ बर्फ रहेछ छिटो पानी लामो समय रहेनको त्यो के अरे लेटेन्टको त्यो रहेछ यार बोनस क्लिप आ रहेछ नेटफ्लिक्समा नि आउँदैन अरे कोही न कोहीले पब्लिक गरिहाल्छ अलराइट ब्याक टु वेयर वी वर त मैले यहीँबाट च्याट हेर्न सक्थेँ बट ओह 3 जना लाइक गरेर गाडी छन् यार नाइस ओके कीवर्ड जब भी हम लूप्स को यूज करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। लूप के अंदर जहां पर भी हम ब्रेक कीवर्ड को लिख देंगे हमारा लूप वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा यानी वहीं पर रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ नॉर्मल लूप। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। लूप के अंदर जहां पर भी हम ब्रेक कीवर्ड को लिख देंगे हमारा लूप वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा यानी वहीं पर रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट जहाँ हामीले ब्रेक युज गर्यौँ त्यही टर्मिनेट हुन्छ लूप लाइक त्यहाँबाट बन्द हुन्छ त्यहाँ पछि चाहिँ छुट्टै एउटा नॉर्मल लूप।
एक छोटा सा यहाँ पर नॉर्मल लूप क्रिएट करते हैं जो 5 तक नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर वाइल i इज लेस देन इक्वल टू 5 हमें प्रिंट करना है i को, एंड हर बार हम i को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1। तो इस तरीके से हमारा लूप रन करेगा। अब अगर हमने कहीं पर भी ब्रेक लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो वैसे क्या कर दो, वैसे ही ब्रेक कर दो। सिंपली हमने इस तरीके से ब्रेक लिख दिया विच इज अ रिजर्व कीवर्ड। तो लूप में क्या होगा, लूप में i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगी तो 3 प्रिंट हो जाएगा, पर उसके बाद चेक होगा कि i की वैल्यू 3 है, और जैसे i की वैल्यू 3 होगी हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा, यानी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर लास्ट में प्रिंट करवा देते हैं एंड ऑफ लूप। 5 तक नंबर्स कभी प्रिंट ही नहीं होंगे क्योंकि पहले ही हमने लूप को ब्रेक कर दिया। इसको एक बार रन करते हैं। हमने प्रिंट किया पहले 1 2 3 और जैसे ही हम 3 तक पहुंचे वैसे लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ओके, सो ब्रेक भनेको चाहिँ लाइक केही चलिरहेको कुरालाई त्यही बिचमै रोक्दैन, कन्टिन्यू भने त्यही त होला नि, त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर भने। और हम लूप से बाहर आ गए। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक कीवर्ड काम करता है। अब ब्रेक कीवर्ड को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लुक एट आर सर्च कोड जिसमें हम अपने नंबर x के लिए सर्च कर रहे थे अपने स्टपल के अंदर, तो उसमें क्या हो रहा था, हम इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा नंबर मिल जाए वैसे हम प्रिंट करवा दें कहाँ पर कौन से इंडेक्स पर मिला, और वैसे ही हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने का मतलब है लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड उसके बाद बाकी कोई और एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यानी फाइंडिंग उसके बाद वाले इंडेक्स पर नहीं हो रही होगी। तो यहाँ सिंपली प्रिंट करवा देंगे एंड ऑफ लूप। इसे कर लेते हैं सेव एंड रन। तो पहले फाइंड कर रहा है और जैसे ही नंबर 36 उसे मिल गया यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 पे, वैसे ही प्रिंट करवा दिया फाउंड एट इंडेक्स 5 और वैसे ही एंड हो गया हमारा लूप, एंड ऑफ लूप प्रिंट होकर आ गया। उससे पहले क्या हो रहा था, अगर ये ब्रेक हम नहीं यूज़ करते तो एक बार हमारा नंबर मिल गया उसके बाद भी सर्च कर रहा है, एंड सेकंड टाइम नंबर मिल रहा है तो प्रिंट करवा रहा है, उसके बाद भी सर्च करता रहेगा जब तक टपल कंप्लीट नहीं हो जाता। पर हमें नहीं चाहिए टपल कंप्लीट हो, हमें चाहिए कि एक बार नंबर मिल जाए तभी हम ब्रेक करवाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक का ही सिमिलर सा कीवर्ड हमारे पास होता है कंटिन्यू। ब्रेक से ऑपोजिट इसका काम होता है। जैसे कंटिन्यू का क्या करता है, कंटिन्यू सिर्फ करंट आइटरेशन यानी करंट जो भी टर्न चल रही है लूप की उसे टर्मिनेट करता है और फिर नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल लूप जैसा हमने पहले लिया था। आई को दोबारा से 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक आई लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमें प्रिंट करना है आई को, एंड आई प्लस इक्वल टू 1। एंड यहाँ हम चेक कर लेंगे अगर आई की वैल्यू 3 के इक्वल है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम कर देंगे कंटिन्यू। इनफैक्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसे लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी वैसे ही हम उसे प्रिंट नहीं करवाना चाहते। हम सिंपली क्या करेंगे, अपने आई को कर देंगे +1 यानी आई की वैल्यू 4 करना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं। कंटिन्यू यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंप्लीटली मिस हो जाएंगी और वापस से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होंगे, बस 3 प्रिंट नहीं हो रहा होगा। उसको सेव करके रन करते हैं एंड वील गेट 0 1 2 3 प्रिंट नहीं हुआ, 4 एंड 5 प्रिंट हो गए। ये कैसे हो पाया, आई को क्या करना है उस केस में हम कर देंगे कंटिन्यू। इनफैक्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसे लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी वैसे ही हम उसे प्रिंट नहीं करवाना चाहते। हम सिंपली क्या करेंगे, अपने आई को कर देंगे +1 यानी आई की वैल्यू 4 करना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं। कंटिन्यू यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंप्लीटली मिस हो जाएंगी और वापस से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होंगे, बस 3 प्रिंट नहीं हो रहा होगा। उसको सेव करके रन करते हैं एंड वील गेट 0 1 2 3 प्रिंट नहीं हुआ, 4 एंड 5 प्रिंट हो गए। ये कैसे हो पाया, आई की वैल्यू शुरुआत में 0 थी, हमने चेक किया क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू हो गया। फिर चेक किया कि आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 3 नहीं है, तो हमने 0 को प्रिंट करवा दिया, फिर आई को 1 बना दिया। 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर दोबारा चेक किया 1 क्या 3 के इक्वल है, नहीं है, तो हमने दोबारा 1 को प्रिंट करवा दिया, फिर 2 बना दिया, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। ब्रेक र कन्टिन्यूको मलाई खास कामै लागेन, कामै बुझ्न बुझे बट युज कहाँ हुन्छ यस्तो कुरा त्यो चाहिँ छ कि बनायो राम्रो गर्यो ल एउटा फिचर छ अरे होइन, बट यो कुरा त डाइरेक्ट मैले त कोड हटाएरै गर्न सक्छु नि त। अब यही कन्टिन्यू किन गर्नु, यही कोडलाई मैले चेन्ज गर्न सक्दिनँ र भने। सो प्रोग्रामिङमा के कुराहरू पनि अझै के बाद देखा क्या 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो फिर 2 को प्रिंट करवा दिया, उसे आई को 3 बना दिया। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस। 3 इज इक्वल टू 3 है, येस। फिर आई +1 कर दिया यानी 3 को हमने 4 बना दिया, आई को 4 बना दिया और कंटिन्यू करने का मतलब है इस वाली आइटरेशन के लिए आगे वाली जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे और दोबारा ये जो आई 4 बन गया था, अब 4 के लिए चेक करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, 4 इक्वल टू 3 है क्या, नो, तो हम यहाँ पे 4 को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से 3 का जो प्रिंट करवाने वाली टर्न थी उसको हमने स्किप कर दिया। तो बेसिकली कंटिन्यू एक्ट्स एज स्किप। कुछ भी अगर हम स्किप करना चाहते हैं करंट आइटरेशन में तो जहां हमने कंटिन्यू लिख दिया उसके बाद वाली सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 से लेकर 10 तक बहुत सारे नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इवन नंबर्स के लिए हम स्किप करना चाहते हैं, तो हम सिंपली कंडीशन में डाल सकते हैं कि जैसे ही आई की वैल्यू इवन हो जाए, इवन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। सारे के सारे जो इवन नंबर्स होंगे वो जब 2 से डिवाइड होते हैं तो उनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्किप कर जाएंगे और बाकी सारी केसेस में हम प्रिंट करवा देंगे। तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे 1 से लेकर 10 तक वो सारे हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। जैसे 1 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सारे के सारे क्या है 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर्स हैं। इसी तरीके से मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें स्किप कर दो। सेव किया, रन किया, तो क्या हो गए, सारे के सारे इवन नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। तो इस तरीके से हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क भनेको चाहिँ नट को जस्तो काम गर्छ कि
ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड काम करते हैं। पाइथन के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप्स आर जनरली यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल। ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू त के गर्नु हो, त्यो त कुरा उही हो ल। यसलाई मैले ब्रेक गऱ्यो भने माथिसम्मकै चल्छ, त्यो तलको चल्दैन। अनि कन्टिन्यू गऱ्यो भने यो माथिको के अरे यो दुइटा चल्दैन, यसको तलको चाहिँ चल्छ। कुरा त्यति हो। कन्टिन्यू भनेको स्किप गर्न त्यो माथिको कोडलाई, माथिको के अरे कन्डिसनलाई, त्यति मात्र हो। ब्रेक इज एज इट इज, ब्रेक युज गरेपछि ब्रेक युज गरेपछि ब्रेक पछिको स्टेटमेन्ट अर कन्डिसन चेक हुँदैन। कमेन्ट कसरी गर्ने हौ? ल के हो यो? एक त यो किबोर्डले नि अति ल्याङ गर्दो रहेछ। ए होइन एकैछिन फङ्सन भयो। कन्टिन्यूको काम पनि सेम हो। कन्टिन्यू चाहिँ स्किप गर्दो रहेछ। लाइक एउटा लुपको कन्डिसन लगाउँदा कन्टिन्यू युज गऱ्यो भने माथिको कन्डिसन स्किप गरेर कन्टिन्यूको पछिको स्टेटमेन्टहरूलाई मात्र हेर्ने रहेछ। है त। अब हामी कहाँ पुग्यौँ? हामी पुग्यौँ अब फर लुपमा। है ल दिदी, भाइ दिदी सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल यानी पहले एक चीज़ आ रही है, फिर दूसरी चीज़ आ रही है, फिर तीसरी चीज़ आ रही है। इस तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे कोई लिस्ट के अंदर जब हम ट्रैवल करेंगे सीक्वेंस से करेंगे, पहले पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। किसी टपल के केस में ट्रैवल करेंगे सीक्वेंस में ट्रैवल करेंगे, स्ट्रिंग के केस में ट्रैवल करेंगे सीक्वेंस में ट्रैवल करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास इंडेक्स होता है एक तरीके से इंडेक्स वाइज, या जिस भी किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। तो सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल के लिए हम फॉर लूप्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स एटसेट्रा। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, मान लेते हैं हमारे हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, इस लिस्ट के हमें सारे एलिमेंट्स पर जाना है और हम इंडेक्स की फॉर्म में नहीं जाना चाहते वाइल लूप के अंदर, तो हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं फॉर, और फिर यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, एलिमेंट लिख सकते हैं, आइटम लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, और ये इन जो है ये हमारा कीवर्ड होता है। फिर हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं और फिर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एक करके लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम चाहें तो उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, फॉर कीवर्ड होता है, फिर हम कोई एलिमेंट लेते हैं इन आर लिस्ट और फिर उस आइटम के ऊपर हम कोई काम परफॉर्म कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ लिस्ट जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स को मुझे फॉर के अंदर प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे फॉर, अभी यहाँ पर नम लिख लेते हैं, नम इन लिस्ट। तो ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, या इसे हम नंबर्स कह देते हैं, नंबर्स, एंड इसे नम की जगह वैल्यू कह देते हैं। तो एक एक करके हम हर एक वैल्यू पर जाएंगे। पहले हमारी वैल्यू 1 होगी, फिर हमारी वैल्यू 2 होगी, फिर हमारी वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस तरीके से। और हम हर बार प्रिंट करवा सकते हैं अपनी वैल्यू को। इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो वील गेट आवर नंबर्स 1 2 3 4 5। एंड उसी तरीके से अगर इस लिस्ट के अंदर नंबर्स ना होकर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कुछ वेजिटेबल्स होते, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, वी माइट ऑल्सो हैव लेडी फिंगर एंड कुकुम्बर। तो इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास वेजिटेबल्स हो गए
एंड वैल्यू इन, अपनी लिस्ट का बस नाम हमें चेंज करना है। तो एक एक करके जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी, जिन्हें हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रन किया, हमारे पास सारी की सारी पहिला तो वेरिएबल बनायो, वेरिएबलमा स्टोर गरे, जुन कि हो इट वर्क्स लाइक एन लिस्ट बनायो, त्यसमा स्टोर गरेछ। फर लुप युज गरेछ फर भ्याल्यु इन वेजिज। यो भ्याल भनेको के भन्दाखेरि यो भ्यालुहरूलाई भ्याल भने हो के, आई गेस सो, लाइक द्याट्स हाउ इट वर्क्स। म एक्ज्याक्टली स्योर छैन, बट लेट्स सी, गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ त्यो। इन फर भ्याल्यु, लाइक भ्याल्यु इन, त्यो जुन छ नि यो फुल फर भ्याल्यु बोलायो, केमा छ, भेजिजमा छ, इन भेजिज बोलायो, फेरि प्रिन्ट भ्याल गरिदियो। भ्याल भनेको यही भ्याल वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम। त्यसो भए त यो जे पाए त्यही नै हाल्दा भयो। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले सो दिदीले के गर्नुभयो भन्दा पहिला त एउटा लिस्ट बनाउनु भयो। लिस्ट इक्वल्स इसका बारे में स्पाइडरमैन कॉमा स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3 पनि थियो। favorite है by the way, Spider-Man। यति सामान राखौँ मैले, यो मैले लिस्ट बनाएर एउटा होइन। अब लिस्टमा के गरेँ, लिस्ट बनाएपछि मैले के गरेँ, लुप एउटा बनाएँ। फर भन्ने मैले लुप बनाएँ। अब फर लुपमा यो होइन भ्याल रहेछ अरे कि, भ्याल रहेछ फर भ्याल्यु इन लिस्ट प्रिन्ट लिस्ट। सो दिस शुड हैव प्रिन्टेड। गऱ्यो सबै लिस्ट प्रिन्ट गऱ्यो। अब लिस्ट यसमा नि मैले 0:1 राखेँ, के हुन्छ हेरौँ त। 0 के भयो यार, स्पाइडरमैन मात्र प्रिन्ट भयो। 1 सम्म, लाइक 0 to 1 को बिचमा के पर्छ, इनिसिएट 0बाट भयो, त्यो मात्र प्रिन्ट भयो। एन्ड 1 सम्म हुन्थ्यो, बट त्यो प्रिन्ट चाहिँ भयो भने लास्टको चाहिँ प्रिन्ट भयो। मैले यहाँ 3 हालिदियो भने 0 1 2 स्पाइडरमैन 3 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो, राइट। बट म्यान इट्स काइन्ड अफ वियर्ड, यु नो, किनकि लाइक मैले यहाँ 1 लेख्यो भने, ल यस्तो है, 1 मा आएर एन्ड हुन्छ। जस्तो मैले 3 लेखाएको थिएँ, 0 1 2 3 0 1। ए ओके ओके, इट मेक्स सेन्स।
के भयो बट हामीले अहिले यो गर्ने होइन है त्यसमा नि यो तिमीलाई अब केही 4 नम्बरको प्रिन्ट गर्न लाग्छ अरे के हो यो 1 2 3 को लास्ट अब के होला र अब शिट ए यसरी काम गर्छ यस Spider-Man 2 yes, this is the 4th as expected but मलाई यो चेक गर्नु छ कि यो भ्याल र त्यो हाल्दा मात्र हुन्छ कि फर सामान लेखौँ है बस सामान okay that's the same thing so this doesn't make any issue अब मैले यहाँ जे लेख्दा नि भयो गुल्ला लेखेँ नि it works the same हैन प्रिन्ट गुल्ला ए बाइ द वे अघि के भयो भन्दाखेरि यिनीहरू एकछिन स्पाइडरम्यान 4वटै प्रिन्ट भयो त 5वटै भयो बट अघि मैले यो गुल्ला यिनीहरूलाई मैले गुल्ला भने कि मैले गुल्ला यता प्रिन्ट गराएँ बट अघि मैले के भने भन्दाखेरि अघि मैले के भने भन्दाखेरि यसलाई मैले गुल्ला छोडेर मैले यसलाई लिस्ट नै प्रिन्ट गर भनेको थिएँ अनि लिस्ट प्रिन्ट गरेँ बट यसले 4 चोटि चाहिँ किन गर्यो 1 2 3 4 5 ए रोज एन्ड कलम वाइज यसले सेम काम गर्यो आई गेस सो थिङ्क अब यसले मलाई सोध्ने मन छैन क्या त्यो मासालाई त्यस्तो च्याट गरेर त को गरोस् होइन बट या वी आर गेटिङ इट गुल्ला नि नभनौँ न हिरोजहरू त अब हिरोज मात्रै भन्यो भने यिनीहरू मात्र प्रिन्ट गर्छ भर्टिकली प्रिन्ट गर्छ क्या एकचोटि मात्र प्रिन्ट गर्छ यहाँ ओ गरेँ नि जिजिज अलि एलिमेन्ट अझै थप्न मन यार टाइम पास गर्नु ल सजेस्टै हानिदिएर ल सबै आयो है नो वे होम ब्रान्ड न्यू डे नि हालिदिउँ न त भोलि पर्सि त आइहाल्ने हो 27 28 29 30 2 दिन त छ Spider-Man brand new day ल है यसलाई थाहा नै रहन्छ लामो जेनी है खाते साला अब मैले हिरो ट्रेन नगरेँ हो एकछिन यार के कहाँ के भयो मलाई सजेस्ट चाहिएन कि यार छोड न काम गरिरहेको छु यहाँ आएर मैले हिरोज होइन एकछिन के भन्छ हौ यो बेला ए कमाले गर्दा भइरहेको रहेछ ट्याब 9 छ मेरोमा चाहिँ इन्स्टल मैले गरेकै छैन अनि किन हो के हो यस्तो यार सिकिरहेको छु यार म सिक्न देऊ न मलाई अब ल यसरी प्रिन्ट गर्छ अलराइट
सो होप द कन्सेप्ट इज क्लियर. हामी होप कि मेरो त भयो, मैले बुझेँ के गर्नुपर्ने रहेछ. 1 2 3 अल्ट ल है. दिदी बोलौँ त फेरि कहाँ पुग्नुभयो हजुर भन्दा गएर यस्तो नंबर्स ना होकर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कुछ वेजिटेबल्स होते, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, वी माइट ऑल्सो हैव लेडी फिंगर एंड कुकुम्बर. तो इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास वेजिटेबल्स हो गए. एंड वैल्यू इन, अपनी लिस्ट का बस नाम हमें चेंज करना है. तो एक एक करके जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी, जिन्हें हम प्रिंट करवा सकते हैं. सेव किया, रन किया, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगी. तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है. अब हम चाहें तो फॉर लूप को किसी टपल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक टपल को क्रिएट करते हैं. टपल के अंदर हम कोई भी रैंडम नंबर्स जो हैं उन्हें ले सकते हैं. एंड फॉर नंबर इन टपल हमें प्रिंट करवाना है अपने नंबर को. तो इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स सेम सीक्वेंस में प्रिंट होकर आ जाएंगे. तो जनरली अगर हमें किसी आइटरेटर के ऊपर काम करना है, यानी हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, फिर हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन है, तो वो सारे काम हम व्हाइल लूप से करेंगे. और अगर हमें किसी डेटा टाइप के ऊपर ट्रवर्स करना है, जैसे टपल हो गया, जैसे लिस्ट हो गई, जैसे स्ट्रिंग, होगी. तो वो सारे काम हम कैसे करेंगे, वो सारे काम हम फॉर लूप से कर रहे होंगे. यहाँ पर स्ट्रिंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड अपना कॉलेज. तो यहाँ पर अगर मुझे लूप लगाना है फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, हम हर बार प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कैरेक्टर को, सेव कर लेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास सारे के सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के प्रिंट होकर आ जाएंगे. अब जब भी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं या वाइल लूप यूज़ करते हैं, उसके साथ में वी कैन यूज़ एन ऑप्शनल एल्स. ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसको यूज़ करना कंपलसरी हमारे लिए नहीं है. एल्स को यूज़ करने का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने लूप के अंदर कुछ काम किया, अगर हम चाहते हैं जैसे ही लूप खत्म हो जाए उसके बाद एक कुछ काम होना चाहिए, कुछ चीज़ आपने प्रिंट करवा दी, कुछ और चीज़ कर लिया, तो वो सारे काम हम एक ऑप्शनल एल्स के अंदर कर सकते हैं. यानी इस तरीके से सिंपल तरीके से हम अपना लूप लिखते हैं और फिर बाद में हम एक एल्स लिखते हैं कोलन, एंड फिर हम अपना काम जो है उसे करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें हमने प्रिंट करवा दिया. अब इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने के बाद हम एल्स के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं एंड. से सेव कर लिया, रन किया, तो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होकर आ गए और लास्ट में हमारे पास एंड प्रिंट होकर आ गया. अब इसमें हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि मुझे इस एल्स की जरूरत क्यों पड़ी. फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रिंट को बिना एल्स के यहाँ पे लास्ट में हम एंड लिख देते तो भी तो सेम आउटपुट हमारे पास आ जाता. तो एल्स की क्या जरूरत पड़ी. एल्स की हमें जरूरत उन स्पेसिफिक केसेस के अंदर पड़ सकती है जहां हम ब्रेक को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोड है, हम चाहते हैं कि हम अपने कैरेक्टर्स के अंदर, अपनी स्ट्रिंग के अंदर मुझे सर्च करना है कि मेरा कैरेक्टर ओ कहाँ पर आता है. तो हम यहाँ पर सर्च लगा सकते हैं कि जहाँ पर भी मेरे कैरेक्टर की वैल्यू ओ के इक्वल हो जाए, जहाँ पर भी कैरेक्टर की वैल्यू ओ के इक्वल हो जाए, वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ओ फाउंड और वहीं से कर जाएंगे हम ब्रेक. इस तरीके का हमने कुछ कोड लिखा और बाकी सारे केसेस में हम अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करते रहेंगे. तो इस केस में अगर हम सेव करें और रन करें तो हम पहले ए पर गए, हमने सर्च किया, यहाँ पे ओ नहीं आता, फिर हम पी पर गए, फिर हम एन पर गए, एन प्रिंट करवा दिया, ए पर गए, ए प्रिंट करवाया, सी पर गए, सी प्रिंट करवाया, फिर फाइनली हमें क्या मिल गया, ओ पर गए और ओ हमें मिल गया, तो हमने प्रिंट करवा दिया ओ फाउंड यहाँ पर, और फिर हम ब्रेक कर गए लूप से. अब जब हम लूप से ब्रेक करके गए तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हमारा एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पर यहीं पर हमने एल्स नहीं लिखा होता.
हमने सिर्फ एंड किया होता तो हमारा एंड प्रिंट हो जाता। तो जिस भी केस में हम चाहते हैं कि लूप जब तक पूरा रन करे तब कुछ काम हो तो उसे हम एल्स के अंदर लिख सकते हैं। यो प्रिन्ट पनि यो थाहा छ, यो एन्ड वाला जुन प्रिन्ट छ त यो के भन्छ यो एन्ड वाला छ त यो पनि यो के अरे इफ को भित्र परेको भए चाहिँ इफ को भित्र के यो ब्रेक पछि जुन परेको भए चाहिँ यो पनि प्रिन्ट हुँदैन थियो के सी त किन सी भन्नु वो एल्स वाला काम ब्रेक वाले केसेस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर बाहर जो हम काम करेंगे वो तो हर केस के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए ऐसे काम जिन्हें हम लूप के कंप्लीट एंड तक करवाना चाहते हैं उन्हें हम अपने एल्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं यूजिंग फॉर। तो इन दोनों सेम कामों को करने के लिए हम अपने फॉर लूप को यूज करेंगे इस बार। सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार पॉज करना है लेक्चर को, खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन हमें कह रहे हैं प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ लूप। सिंपल सा पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ लिस्ट कॉल्ड नंबर्स। इसके अंदर हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार पॉज करना है लेक्चर को, खुद से एक बार यूजिंग फॉर प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग के रहेछ फर लूप युज गरेर। सो एकछिन है, क्वेसन कहाँ गयो? युजिङ फर लूप छ युजिङ फर लूप है त। So again we can say it's a square. So what is like number I अब के भन्नु एकछिन तरिका आफै किन हुन्छ हौ मैले फर एउटा लुप बनाएँ यस्तो रिकमेन्ड आएको फर आई अब नम्बरमा मैले अब प्रिन्ट गरेँ आई होइन नम्बर इन्टु के गर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको मैले स्क्वायर निकालेर दिदियो कि यिनीहरूको स्क्वायर निकालेर दियो। प्रिन्ट यही गर्नु छ भने त प्रिन्ट आई गरिदिएँ मैले। वाहियात कुराहरू छ कि हेर्न। अब मैले ल मान नम्बर गरेको सिधा हुन्छ कि सिधा आयो, कतिचोटि आयो त्यही आएको के। सो इट्स काइन्ड लाइक इजी छ कि यो सुरुतिर त। अब बाँकी त उस्तै हो। Search for number x and tuple using this. Now x equals to k 81 गरिदिनु यसपालि। अब I equal to 0
for I in num in range के कसरी गर्छ अरे रेन्ज वाला पाउने आउँदैन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ लूप। सिंपल सा पहले एक लिस्ट बना लेते हैं एलिमेंट को। फॉर अ नंबर x इन दिस टपल यूजिंग लूप। इस बार डायरेक्ट हमें अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू 0 अंदर आ सकता तुम्हारे पास आ रहा है नंबर फाउंड एट इंडेक्स 6 एंड इंडेक्स 10। ये मेरा इंडेक्स 6 है जहां मुझे पहली बार 49 मिला, ये मेरा इंडेक्स 10 है जहां मुझे सेकंड टाइम विद कर रहा है, पर वो लिस्ट डेटा टाइप की फॉर्म में नहीं। नंबर्स के क्या करता है रेंज फंक्शन के बारे में। हमारे फॉर लूप्स वर्क करते हैं विद आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेंज फंक्शन के बारे में। रेंज इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन जब भी हम लूप्स को यूज कर रहे होते हैं। रेंज फंक्शन क्या करता है, हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है। सीक्वेंस का मतलब है एक तरीके से लिस्ट रिटर्न कर रहा है, पर वो लिस्ट डेटा टाइप की फॉर्म में नहीं। नंबर्स की एक नॉर्मल लिस्ट होगी उसे रिटर्न कर रहा है, सीक्वेंस को रिटर्न कर रहा है। और ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड ये Thank you so much for watching. Shit, अब एकछिनमा मुभी हेर्छु है अनि सोध्छु सुत्नु पर्छ भोलि उठेर फेरि पढ्छु फेरि स्ट्रिम गर्छु होप सो आई डु इट समथिङ अफ क्यामेरा द्याट वाज इट एन्ड या दिस इज मी ए सिक्ना ठिकठाक छ अलिअलि हुन्छ त ल एकछिन है अब यहाँ यस्तो भएको यस्तो गरिदियो भने that's fine. So कसम क्या स्केरी लाग्यो यार भर्खर एकदम Okay, so that is it for today guys. अब जे भयो भयो सक्यो आजको लूप्स त्यति अब अहिले चाहिँ मैले गरेँ है सो होप टु सी यु टुमोरो आई गेस फेरि स्ट्रिम गर्न बस्यो भने लाइक यस्तो हो कि स्ट्रिम रेगुलरली गरेर म पढ्न चाहिँ पढ्छु अब मलाई पढ्नु पर्ने खासमा गरेर सिएसआइटीलाई हो इन्ट्रान्स एक्जामलाई बट ल ठिक छ बाई गाइज आजदेखि यस्तै गन्जीमा आउँछु सरी You will not be able to reconnect your stream